Okay, now, so what we were discussing last time was about hybridization. तो देखा ही था, उसके बाद we had started planarity of molecules, and in that planarity of molecules, if you see, हम लोगों ने बात की थी अगर sp and sp2 का कॉम्बिनेशन भी रहा या फिर इंडिविजुअली sp और sp2 भी रहा तो एक्सक्यूज मी, मॉलिक्यूल्स आर जनरली प्लेनर, है ना। sp3 में हम लोगों ने बात की कि अराउंड एन एटम विच इज sp3 hybridized, the two atoms around it can be brought in the same plane. The third and fourth, if present, have to go to out of plane, है ना। स्विच ऑन योर वीडियोस, है ना, सब लोग वीडियो ऑन कर लो। तो ये कहानी हम लोगों ने की थी और उसकी बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और लास्ट में कहानी आ गई थी समथिंग कॉल्ड एलिन एंड क्यूमिलीन सिस्टम पे, जहां मैंने बात की थी कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस आ रहा है। नाउ इन टुडेज लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट exceptional cases of planarity in which we'll be having all the atoms with sp or sp2 hybridization, even then the molecule will not be planar। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट केस इज एलिन एंड क्यूमिलीन सिस्टम इन जनरल इज देयर। यहाँ पे द पॉइंट इज, if I am having a consecutive double bond system between carbon atoms, then that is called a Cummingling system. And in this case, if you are having odd number of carbon or even number of consecutive double bond, then molecule is found to be non-planar। ठीक है, तो जैसे we'll discuss that example जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी। एलिन का एग्जांपल लेते हैं। तो एलिन वाले एग्जांपल में इफ यू सी, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था ये वाला केस। इफ यू सी एलिन का एग्जांपल, इसकी बात मैंने की थी और इनफैक्ट मैंने मॉडल से तुमको बना के भी दिखाया था कि इफ यू सी दिस थिंग, तो यहाँ पे यू आर हैविंग फर्स्ट एटम sp2 hybridized। if I just write the hybridization of all these atoms, sp2, this is sp and this is sp2। even then if you see this molecule, I am claiming that it is non-planar और वो मैंने दिखाया विद स्ट्रक्चर से तुमको लास्ट टाइम कि इट इज कमिंग non-planar, है ना। अब ये क्यों non-planar है, तो इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर इस तरह का स्ट्रक्चर आया था जो मैंने मॉडल से बना के दिखाया था, दैट वाज appearing like इट वाज appearing like this, है ना। जिसमें दो अगर प्लेन में लिया तो इधर के दो हाइड्रोजन अगर प्लेन में मैंने लिए ना, ये दोनों हाइड्रोजन अगर प्लेन में ले लिया तो ये दोनों अबव एंड बिलो द प्लेन हो जा रहा था, है ना। इसी को दूसरे तरीके से देखो, एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसी का देखो, एंड देन यू विल बी गेटिंग क्लियरिटी की किसी दो हाइड्रोजन को अगर मैंने प्लेन ऑफ द कार्बन में लिया ना, तो देन रिमेनिंग टू विल बी आउट ऑफ द प्लेन। जैसे यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें इफ आई एम टेकिंग दीज टू इन द प्लेन, ये दोनों को अगर मैंने प्लेन में रखा तो ये दोनों अबव एंड बिलो द प्लेन हो जाएंगे ना। सो दैट्स व्हाई अगर मैंने पेज के प्लेन को प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल लिखा है तो ये दोनों आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, वन इज अबव द प्लेन अप टुवर्ड्स अस एंड अनदर इज अवे फ्रॉम अस, है ना। तो वी कैन नॉट ब्रिंग ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन द सेम प्लेन। अब ये हो क्यों रहा है पहले ये समझते हैं। तो अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लोगे, है ना। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, wherever you are having doubt तो डेफिनेटली कीप आस्किंग these doubts। why it is happening that we are going to discuss right। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसी मॉलिक्यूल को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आई विल बी मेकिंग अ प्लेन एंड आई विल ट्राई टू पुट ऑल द एटम्स इन द सेम प्लेन, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या गड़बड़ होता है। सो मॉलिक्यूल के लिए वी हैव गॉट 3 कार्बन एटम्स, तो सिग्मा बॉन्ड्स तो आर ऑलरेडी देयर। नाउ मान लो इधर से मैंने, इसी साइड से एंड करते हैं, इधर से मान लो मैंने ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बना रखा है। अब हुआ क्या होगा, दिस कार्बन इज sp2 hybridized। तो वी आर अज्यूमिंग कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में s एंड एनी टू ऑफ p ऑर्बिटल्स लाइक px py, अभी के लिए अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट दिस इज xy प्लेन। ठीक है, दिस प्लेन जो मैंने बनाया है दिस इज xy प्लेन, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। देन वी आर सेइंग दैट कि ये s px और py से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एंड जो pz रहेगा ना दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट एज, मान लो ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया कि दिस इज वन ऑर्बिटल, एक बिलो द प्लेन भी आएगा। सो नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म द पाई बॉन्ड, सो उसके पैरेलल में ये आएगा, तभी तो ऐसा हुआ है ना। नाउ इफ आई एम सेइंग दिस इज pz, डेफिनेटली दिस हैज टू बी pz ओनली, है ना। इज इट ओके? Now let's talk about this second carbon. This carbon is sp hybridized, है ना। ये sp hybridized है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट इसमें s एंड अभी के लिए मान लो px is involved, we are assuming it, ओके। अब अगर s और px ने पार्टिसिपेट किया है और pz ने ऑलरेडी इधर लेफ्ट साइड में पाई बनाया हुआ है, तो अनदर पाई विल बी फॉर्म्ड बाय py, है ना।
So I am making that as blue wala. So there is py which will be forming another. तो इसका भी देखो py participate करेगा ना. Now जैसे ही मैंने बोला this is participating in formation of another pi bond. अब कार्बन के लिए जो लास्ट वाला कार्बन है which is having again sp2 hybridization. तो इसमें s is there and then py is already involved in pi bond formation. So it has to utilize px and pz है ना. That means हम लोगों ने चला था, हम लोगों ने स्टार्ट की थी जर्नी एक्स वाई प्लेन से. अब इसके जो 3 ऑर्बिटल बनेंगे दैट विल बी कमिंग इन एक्स जेड प्लेन है ना. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अब जो ये बॉन्ड बनाएगा ना, द रिमेनिंग बॉन्ड में से वन विल बी अबव द प्लेन, ऐसा आ जाएगा, एंड अनदर विल बी बिलो द प्लेन, इधर कहीं आ जाएगा है ना. And because of that, even if all the atoms are either sp or sp2 hybridized, the overall molecule is not becoming planar, it is becoming non-planar. If they are asking you how many atoms can be brought in the same plane in this molecule, maximum number of atoms which can be brought in the same plane, what will you answer? 5. 5. 3 carbon and 2 hydrogen. All 7 will not be coming in the same plane. Okay. One more question, important one. If I ask you distance between this and this, if that is L1, and distance between this and this, that is L2, are they same or L1 is greater or L2 is greater? So L1 क्या था? L1 is distance between this atom and this atom. Okay, and L2 is this atom and this atom. I'll just indicate it in this way. This is L1 and this is L2. What is the relation? Because this thing we are going to utilize in the chapter called isomerism. Are they same or different? Anyone? Same. So different. Same or different? That only I am asking. Okay, you are Rishit is saying L2 is greater than L1. Okay, that will require imagination. If you see it ना, मतलब coordinate से भी चल के देख सकते हो. Okay, yes, he is also saying different. Okay, let's see. अच्छा मैं तुमको दिखाई देता हूँ. Okay. So let's see that. Let me join it. Sir. Yeah. Sir. Adi. Sir, in the diagram, can you re-explain why after the C double bond C, after the H bond, why are they out of the plane? Okay, like I told you, na, already we have decided that if one PZ is being is forming the pi bond, if PZ is forming, I'm audible, na? Yes, sir. Yeah. So I'm saying that if first carbon ka PZ is involved in, we are assuming that कोई भी एक लेके चलोगे and we can find out the same result. So if I'm assuming that first carbon is involving its PZ in the pi formation, so second also has to involve PZ only for the formation of pi. Then only lateral overlap will happen, है ना? Yes. Is it okay? And then उसके बाद if it is utilizing PZ on the left side, then middle carbon will be utilizing any another P for the formation of the second pi bond, because the second central carbon is forming 2 pi bonds, है ना? Is it okay? Yes. Now, if it is, if we assume that second P which is involved in the formation of the another pi bond is Py, then the last carbon also has to include Py only, na? Yes, sir. Okay. Then what are the options available for the last carbon in the hybridization? S, Px and Pz, because Py is already utilized in the formation of pi, na? Okay. If S, Px and Pz आएगा तो वो कौन से प्लेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा? XZ प्लेन में ना? Sir, Py which will be perpendicular.
इफ आई एम हैविंग एस पी एक्स एंड पी जेड, ये तीनों अगर बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो किस प्लेन में बनेगा? एक्स जेड प्लेन में ना. S is spherical, px is in along the x axis, z is along the y axis, z axis है ना. तो ये तीनों का जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो दे विल बी ऑलवेज बी प्रेजेंट इन एक्स जेड प्लेन ओनली, है ना. इज इट ओके? ये क्लियर है क्या? हाँ सर समझा. है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग नॉन प्लेनर. अभी मैं तुमको दिखाता हूँ. It is not having stops. Okay, now you can see it now. This one. So what I am saying, this is the structure of allene, है ना. Now we were talking about if I am having these two hydrogen, इसको मैंने plane में रखा है and I am talking about इससे distance लो या इससे distance लो. Okay, so now you can see that इधर से मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, geometrically they are same ना. This distance यहाँ से यहाँ and यहाँ से यहाँ, that distance is same ना. देखो जरा, कोई भी एक चूज कर लो. मैंने मान लो इधर ही इसको चूज किया, दिस इज इन द प्लेन. ये वाला जो इसको प्लेन में रखा और ये प्लेन से ऊपर है ना. जस्ट बाय यूटिलाइजिंग द ज्योमेट्री यू विल गेट दैट कि ये डिस्टेंस जितना है. अब इसी को उल्टे से देखो, इसी को मैंने ऊपर ले आया, क्या डिस्टेंस चेंज हुआ या सेम हुआ? सेम है ना. इज इट ओके? क्लियर है ये पॉइंट? सर जस्ट अ क्वेश्चन. हाँ सर मतलब पहले आपने वो एक साइड के कार्बन एटम से लिया था और अभी आपने जब फ्लिप किया तब दूसरे साइड से लिया. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अब इसी को मैं कलर चेंज कर देता हूँ. चेंज द कलर ऑफ द एटम सो दैट यू हैव बेटर क्लियरिटी. अभी चलो इसको मैंने व्हाइट कर दिया ना, व्हाइट से देखने का, ठीक है. सो इफ आई एम हैविंग व्हाइट से इसका डिस्टेंस, ओके, ये मैं ऐसा करके दिखा रहा हूं तो एक इमेजिनेशन है. अभी मैं इसको इधर कर रहा हूं, ठीक है, इधर कर रहा हूं. अभी मैं ये नीचे वाला ऊपर आ गया ना. यस सर. ओके, चलो पहला क्वेश्चन, व्हाइट से इस ग्रीन का डिस्टेंस और ग्रीन से ग्रीन का डिस्टेंस, इज इट सेम और डिफरेंट? सर इट विल बी सेम. इट विल बी सेम. सो यू आर सेइंग दैट यहाँ पे कोई एटम रहे ना तो उसका डिस्टेंस यहाँ से सेम रहेगा. यस सर. नाउ आई एम जस्ट रिवॉल्विंग इट एंड आई एम ब्रिंगिंग व्हाइट हेयर, और ऐसा लाते देखो ये नीचे वाला देखो ऊपर आएगा अभी, है ना. यस. अभी व्हाइट का डिस्टेंस इससे उतना ही है ना. Oh yes sir. So it is becoming same, and that's why we are saying in this case the distance between this and this, or this or this, or this and this, or this and this, ये सब बराबर होंगे आपस में. Is it okay? Everyone Yes. clear ना? So this was the point I wanted to make. अभी बाकी डिस्कशन तो अपना theoretical जाएगा. अब इसे मैं पहले से दिखा देता हूँ. If I am having regular 3 double bonds, then it will become planar. And then distance will be different this time. Now if you see we have got 3 double bonds. Now it is completely planar, है ना. ये सामने से दिख रहा है. It is completely planar. Now if I ask you this one to this and this to this, they are different distances, है ना. Is it okay everyone? It is like अगर मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया तो ये साइड है और ये जो है ये डायगोनल हो गया है ना. इन चारों को लेके मैंने अगर एक रेक्टेंगल बना दिया, if I am making a rectangle, then this distance is an edge, length बोल दो, and this will be a diagonal, है ना. Diagonal will always be greater than this length, है ना. And that's why we are saying कि if it is completely planar, then distance between this to this will be different than this to this. But if it was only 2 regular double bonds and we were talking about 2 different things, then the distance was same. Like if I'm having this one, then distance to white to green or green to green or white to white or green to white, कोई भी डिस्टेंस ले लोगे ना, व्हाइट टू व्हाइट ले लो या ग्रीन टू व्हाइट ले लो या ये ग्रीन से ग्रीन और ग्रीन टू व्हाइट, दे ऑल आर सेम, है ना. इज इट ओके? सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन आइसोमेरिज्म. तो वहां पर काम आएगा, याद रखना है इसको. हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे इस चीज को. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच वर इंपॉर्टेंट, और इसी फेज में हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो दिस वाज द फर्स्ट केस, है ना. तो वी आर सेइंग दैट इन दिस केस
we are saying L1 was equal to L2 जो मैंने पूछा था, but if I am having a 3 regular double bond system, then L1 and L2 will be different. I'll give you that question also. So let's go to that part again. Screen is visible ना? हाँ. So now ये मॉडल आता है निरंजन, मतलब दिस द केमिस्ट्री का मॉडल आता है, मतलब वी यूटिलाइज इट जस्ट टू हैव यू बेटर इमेजिनेशन, है ना, उसके लिए. तो ये एक कहानी आ गई जिसमें हम लोगों ने बात की कि इफ आई एम हैविंग अ रेगुलर डबल बॉन्ड सिस्टम, इसी के नीचे मैं दिखा भी देता हूँ. इफ आई एम हैविंग, तो लेट मी सी इफ, हाँ, इफ आई एम हैविंग this structure, if I am having this structure, I told you कि ये अगर प्लेनर नहीं है तो जैसा मैंने दिखाया कि एक बोल्ड लाइन है, वेज लाइन है और डॉटेड लाइन है ना. So this time we are saying, in this case we are saying L1 will be equal to L2. It is a non-planar structure, है ना, even if all the atoms are sp or sp2, है ना. But if I am having another structure जिसमें 3 डबल बॉन्ड रेगुलर आ जाएंगे, if I am having 3 regular double bonds, ऐसा कुछ दिखे, तो दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है. दिस टाइम विल से L2 इज ग्रेटर देन L1, है ना. दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, जैसा दिख रहा है वैसा ही स्ट्रक्चर है. इज इट ओके? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो अभी दूसरे केस में आते हैं, वेयर वी आर गोइंग टू गेट द एक्सेप्शन इन प्लेनरिटी. इवन इफ ऑल द एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वी विल बी गेटिंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर. उसका जो सेकंड केस है, फर्स्ट केस एनी डाउट? एनी डाउट? चलो लेट्स गो टू द सेकंड केस. So we are going to second case in which we are saying, if I am having a cyclic molecule in which alternate position pe we are getting double bond, then we are saying that ki in that case, if I am having a ring size more than 7, particularly up to 10 12 40 8 10 12 में होता है, these membered rings are found to be non planar. वो होता क्यों है, that we can see. जैसे इफ आई से, अच्छा, एक रेगुलर पॉलीगन का एंगल क्या बोलते हैं? इफ इट इज हैविंग n वर्टिसेस, हाउ मेनी, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन? 360 by 360? n. नहीं नहीं नहीं, एंगल ऑफ द पॉलीगन आई एम टेलिंग. इफ आई एम सेइंग आई एम हैविंग अ हेक्सागन, ऐसा कुछ अगर रेगुलर वाला आ गया, व्हाट इज दिस एंगल? इफ आई एम सेइंग आई एम हैविंग a square, 120. if I am having this one, how much this angle is? 60, na? This is 60, 60, 60. 360 band will not give you 60, है ना? It नहीं is सर, उसका एक फॉर्मूला था, वो याद नहीं आ रहा. 180 degree Sir, n into minus 1 2 minus, into pi upon n. हाँ जी, 2 upon Sir, n, है ना? Sir, n minus 2 into pi upon n. So this is the angle of regular polygon. Okay. Now, मान लो अपने पास, if I am having a 6 membered ring और हेक्सागन, अगर मैंने रेगुलर हेक्सागन लिया तो फिर एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 6 लिख देंगे. हाउ मच वी आर गेटिंग? 180 degree into, this is 1 by 3, so 2 by 3. How much we are getting? 120 degree, है ना? 120. Is it okay? So if I am having this compound, which is benzene actually, what is the ideal bond angle for sp2 hybridization? 120, na? So this is 120 degree only.
So if you find this structure which is having 120-degree angle and which is the ideal angle as per hybridization, and same is the angle coming for the regular polygon, that means the actual angle is coming as per the hybridization, then there is no angle strain. We are talking about something called angle strain. Angle strain is difference between the actual angle and the ideal angle as per hybridization. Okay, angle strain will be mod of actual angle minus ideal angle as per hybridization. अभी देखो यहाँ इसके लिए एंगल स्ट्रेन विल बी जीरो है ना, will be zero. But if I'm talking about 8-membered ring, मान लो अभी मैंने 8-membered ring ले लिया, it's like this one, and if I give you, I'm having this compound. Now as per polygon, angle is how much? 135. Okay, 180 degree into 1 minus 2 by 8, and that is 180 degree into 3 by 4, and that is 135 degree, है ना? Will it have any angle strain? Ideal angle is what? 120 degree होना चाहिए था, sp2 है ना सारा का सारा. तो आइडियल एंगल जो होना चाहिए था एज पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज 120 डिग्री. सो इट इज हैविंग एंगल स्ट्रेन, है ना. सो इट इज हैविंग एंगल स्ट्रेन ऑफ 15 degree. Is it okay? So now whenever you are getting such type of angle strain, that brings instability to the compound or instability to the given form of structure of the compound. Is it okay? So now whenever we are talking about this type of system, now we are talking about something called aniline system. ये aniline system क्या होता है? ये इसी तरह के system होते हैं. It will be having formula CnHn and you will be having alternate position पे वो double bonds दिख रहा होगा. That is called aniline system. Like I'll give you some examples. इन्हीं को हम लोग जैसे जो बेंजीन है अपना, we call it 6-aniline. So it is having 6 membered. So its formula is C6H6. तो ये सब देखो, ये सब तुम्हारे कुछ एनुलीन के सिस्टम है. तो इफ यू सी 4 एनुलीन का मतलब ये हो गया, 6 एनुलीन इज नथिंग बट बेंजीन. ये 8 एनुलीन अभी जस्ट मैंने दिखाया था. दिस इज हैविंग 10 मेंबर रिंग. 10 मेंबर रिंग के प्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ रीजन आएगा. विल टॉक अबाउट दैट. बट राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस फॉर्म, इट वाज हैविंग एंगल स्ट्रेन. ओके, दिस इज 12 एनुलीन है और इसके बाद ये 18 वाला दिखा दिया जस्ट टू गो टू अनदर एक्सट्रीम. तो if this is called aniline system, now will all these compounds be non-planar or planar? For that we are saying that if it is having member carbon का number more than 7 and practically less than 14, 8, 10, 12, ये तीन important है. These three are found to be non-planar. मैंने पहले बोल दिया these are found to be non-planar. Now we are looking for the reason, है ना. तो like I told you, इसमें we are getting some angle strain, है ना. Angle strain was how much? 15 degree आ रहा था. That's a significant angle strain. 8-membered, 10-membered में if I ask you ना, what will the angle strain? So that will be, if you calculate the polygon के हिसाब से angle ना, तो that will be 1 minus 2 by 10 and that much minus 120 degree. देखो जरा कितना आ रहा है. 2 by 10 is 1 by 5, 4 by 5, तो 5 से 36, 144 minus this one, तो 24 degree आ रहा है. और बढ़ गया angle strain, है ना. Is it okay? So now, because of this angle strain, we are saying that these are the presented structures are not stable. Is it okay? तो अब ये करेंगे क्या? तो ये करते क्या है ना? They change their form and they become non-planar just to reduce the angle strain. ठीक है? जैसे अगर मैं 8 एनुलीन की बात करूं, जो फॉर्म हम लोगों ने प्रपोज किया था वो एक रेगुलर पॉलीगन जैसा दिख रहा था, बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखने लगता है वो कुछ ऐसा हो जाता है.
वन ऑफ द फॉर्म इज दिस वन, इसको बोलते हैं टब कन्फॉर्मेशन। देखो ये दो जो प्लेन में, ये ग्रीन वाले जो है ना, ये प्लेन में रह गए, और ये दोनों, ये चारों जो है ना, ये वाला पार्ट इसका प्लेन से ऊपर उठ गया, जो मैंने यहाँ दिखाया है ना। तो दिस इज अ नॉन प्लेनर फॉर्म विच इज द प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ C8H8. दिस इज अ नॉन प्लेनर फॉर्म, द एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, तो ये प्लेनर नहीं रहा। इवन इफ ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देखो ना ये भी sp2 ही है, ये भी sp2 है, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एनुलिन सिस्टम में ऑल द कार्बन एटम्स आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एनुलिन कंपाउंड्स आर गोइंग टू बी प्लेनर। लाइक आई टोल्ड यू, पर्टिकुलरली जो हम लोगों को जानने के लिए 8 aniline, 10 aniline and 12 aniline are found to be non-planar at room temperature, और in general हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वैसे 10 मेंबर्ड की बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट 10 मेंबर्ड रिंग ना, तो देखोगे यहाँ क्या होगा। एक फॉर्म तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसके पास और भी ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ था। वी कैन हैव अनदर फॉर्म ऑल्सो, बट वो भी नहीं मिलता है। तो 10 मेंबर्ड का अगर मैं दिखाऊं ना, तो इसके दो फॉर्म देखो मैंने दिखाए हुए हैं। इस फॉर्म में इट वाज हैविंग एंगल स्ट्रेन was 24 degree. So that's why we are saying it is not stable. अच्छा, ये जो फॉर्म मैंने बनाया है इसमें देखो ऑल द एंगल्स आर 120 डिग्री, है ना। दिस इज 120, दिस इज हैविंग 120, दिस इज 120, every angle is 120. This is also same compound, so we are able to get zero angle strain in this case, है ना। But why this will not exist? क्योंकि नहीं मिलता, ये पता है ऑलरेडी अपने को कि ये नहीं मिलता है। So why this is having this not having this structure? Because 120 मेंटेन करने में देखो ना, तीसरा आइटम हाइड्रोजन इधर आएगा ना, और यहाँ भी एक तीसरा आइटम जो आएगा दैट विल बी हाइड्रोजन, एंड दे आर कमिंग सो क्लोज टू ईच अदर ना दैट दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, and because of that, because of proximity of the two hydrogen atoms, we are saying it is becoming unstable. Okay, so this is unstable due to proximity of two H atoms. Okay, so that's why this is the actual form, non-planar form. Is it okay? So could you please just repeat that in the second structure, why is the zero angle strain part? Because all the angles are 120, sp2 demands 120 only, है ना। Yes, You can see sir. the And diagram, है ना, diagram wise देखो ना, सारे angles 120 दिख रहे हैं ना। yes, sir. So experimentally angle 120 आता है। नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंटली नहीं, sp2 की डिमांड इज 120, है ना। Yes, sir. sp2 का एंगल क्या होता है आइडियल, 120। if the given form is not having exact angle 120, it will always have some angle strain. जब तक वो कम रहता है एंगल स्ट्रेन, तब तक वो काम चल जाता है, that means that will exist. but यहाँ पर एंगल स्ट्रेन will be so high in the previous form, ये जो मैंने पॉलीगन वाला फॉर्म बताया, एंगल स्ट्रेन is so high that it will not exist, है ना। वैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 15 डिग्री एंगल स्ट्रेन था, यहाँ पर 24 डिग्री एंगल स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ गया, तो ये दोनों फॉर्म तो नहीं मिलेंगे। 10 Yes. member ring में we are having a possibility of this structure that we are exploring, but still this is not existing, so we need to look for the reason na. Even if it is not having any angle strain, why it is not existing? Then we are saying in order to maintain that 120 angle na, two hydrogen atoms are coming very close to each other, and because of their proximity they'll start repelling each other, and because of that reason this structure might not be existing, है ना। Is it okay? Okay. And Yes, that's sir. why this is the actual form जो मिलता है अपने को, and this is also non planar, है ना। इसको भी आगे यूटिलाइज करेंगे, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बट इन सब का एप्लीकेशन आगे आने वाला है। ओके, आई विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, वहां पर फिर से ये डिस्कशन स्टार्ट हो, इफ आई एम हैविंग दिस कंपाउंड वेदर इट विल बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इस तरह की बात आज हम लोग करने वाले हैं। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एक जस्ट और एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ 12 एनुलिन का। तो 12 Sir. एनुलिन के केस में, हाँ जी Sir, after these aniline convert to the stable form, all the angles become 120 degree. Okay, we'll talk about that. Like 12 एनुलिन में अगेन अभी पॉलीगन बनाने का तो कोई फायदा नहीं, हो तो समझ में आ गया ना कि एंगल स्ट्रेन बढ़ता ही चला जाएगा ना, तो उधर तो नहीं जा रहा है। अगर मैंने ये 120 वाला एंगल किया तो फिर से देखो 12 एनुलिन में ये तीन हाइड्रोजन एक साथ आने लगे ना,
and because of that again this is becoming unstable structure. बट व्हाट इज हैपनिंग ना, इसके आगे जब बढ़ते हैं ना, लाइक इफ यू सी, हम लोगों ने 12 के बाद इधर देखो हम लोगों ने एक 18 एनुलिन बनाया. इवन इफ आई पुट हाइड्रोजन ना, तो ये देखो अब डिस्टेंस काफी ज्यादा हो चुका है इनका, है ना, अभी काफी ज्यादा डिस्टेंस हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्ट एग्जिस्टिंग इन द प्लेनर फॉर्म इटसेल्फ. ओके, सो द लर्निंग इज इन द एनुलिन सिस्टम 4 6 तक कोई इशू नहीं था. 8 10 and 12 are becoming non-planar. 14 is planar at low temperature, but high temperature पे फिर से वो नॉन प्लेनर हो जाता है. तो उसकी बात जो नॉर्मली पूछते नहीं है, और उसके बाद फिर से वो प्लेनर होने लगता है. 14 के बाद 16 और 18 एनुलिन ये सब फिर से वापस प्लेनर हो जाते हैं. ठीक है, तो द रिजल्ट इज कि 8 10 एंड 12 को हम लोगों को नॉन प्लेनर बताना है, उसके पहले वाले सबको प्लेनर बताना है. उसके बाद में भी एक, जैसा मैंने बताया कि 14 वाले का दो केस होता है कि लो टेम्परेचर पे वो प्लेनर होता है, हाई टेम्परेचर पे नॉन प्लेनर हो जाता है. बट अदरवाइज नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट 8 10 एंड 12. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो आई So राइट just दैट. या टेल मी. so when you found like the angle strain of the first structure of 10 annuline, so in that one, when you found the bond angle, why did you subtract 120 from it? Angle strain was what? It was the actual angle or the angle as per the structure minus ideal bond angle. Ideal is what? Oh, 120. 120. Because Oh, hybridization was sp2. sp2 will always demand 120. 120 से आगे जाओ पीछे जाओ, it will have angle strain, है ना? okay, sir. Okay, चलो. Okay, so the final result is 8 10 and 12 aniline are non-planar even if all carbon atoms are sp2 hybridized. So that is the exception of planarity, है ना? Exceptional case of planarity. Any doubt up to this point? Chalo. Third reason for loss of planarity can be something called steric hindrance or steric repulsion. We'll talk about that. So we are talking about the third case. These are the three cases where we are getting exceptional exception in case of planarity. That means exception का मतलब क्या? Even if all the atoms are sp or sp2 hybridized, even then the molecule is not becoming planar. So this is the third case where we are saying कि in few structures you will find that certain groups, adjacent groups are coming so close to each other that they'll start repelling each other, है ना? ये कहानी मैं gaseous state से करता रहा हूँ. जब atoms के बीच में काफी distance होता है ना, they are not attracting each other. But when they are coming very close to each other, the net force will be force of repulsion between them. ऐसा ही molecular structure में हो सकता है. You can have few atoms coming very close to each other. Like I'll tell you some example. जैसे if I am having, ये मान लो बेंजीन रिंग है, यहाँ I है. I is a monoatomic group, है ना? This is one atom, तो ये तो same plane में रह सकता है. यहाँ मैंने NO2 बनाया है, and even NO2 is having nitrogen with sp2 hybridization, है ना? So now if I say, if you see all the atoms which are not terminal are having sp2 hybridization, है ना? This is sp2, sp2, sp2. ये सारे के सारे sp2 हैं. This is sp2, 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 and even this is sp2, है ना? तो इस हिसाब से इसको प्लेनर होना चाहिए. ओके, द होल मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, है ना? बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, इफ यू सी दिस वन ना, ये आयोडीन इज अ वेरी बिग एटम, है ना? फिफ्थ पीरियड का हाँ, फिफ्थ पीरियड का मेंबर हो जाता है. एंड दिस एज अ ग्रुप इज क्वाइट बिग ग्रुप, है ना? अगेन आयोडीन इज अ वेरी बिग एटम, एंड बिकॉज इट इज कमिंग वेरी एडजेसेंट टू 2 आयोडीन ना, तो इसमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा. रिपल्सन स्टार्ट होने के कारण द मॉलिक्यूल विल ट्राई टू मेक द रिपल्सन मिनिमाइज्ड, है ना? इट विल ट्राई टू हैव मिनिमम रिपल्सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग है ना, ये क्या करता है ना, कहता है चलो भाई रिपल्सन दूर करना है तो एक काम करना होगा, इसको रोटेट कर लेते हैं. रोटेट करने का मतलब क्या है ना, ये ऑक्सीजन जो दो दिख रहे हैं ना, उसको प्लेन में रखने की बजाय प्लेन के ऊपर और नीचे कर देता है. ऐसा करने से डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ओ विल बी डिक्रीज्ड, है ना? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये यहां से ऐसा रोटेट करके इट विल मेक अनदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ऐसे देखने से सेम दिखेगा, बट होगा क्या, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है,
यहाँ पे N इज देयर। अब यहाँ पे ये क्या करेगा ना, इस तरफ एक ऑक्सीजन को रख लेगा और एक अवे फ्रॉम द प्लेन ऐसा रख लेगा कुछ। ऐसा होने से डिस्टेंस बिटवीन I एंड O इज डिक्रीजिंग, is increasing, and because of that repulsion will be decreased, है ना? So what is happening, even if all the non-terminal atoms are sp2 hybridized, all the atoms are not becoming in one plane, है ना? Now if I ask you how many atoms can be in the same plane in this compound, what will you tell? What will be your answer if I ask you maximum number of atoms which can be in the same plane? 9. Okay, 7. let's see. 7, I think. Oh, there are hydrogens also. Hmm. चलो देखते हैं। this 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 one and ये सारे हाइड्रोजन भी तो उसी प्लेन में है ना? So now 6 carbon, 3 hydrogen, 6 plus 3, 2 iodine plus 1 nitrogen. All these will be same plane, है ना? In the same plane. So 12 will be the real answer. Is it okay? Now इसकी कहानी और डिटेल में पढ़ेंगे कि where you are going to apply this steric repulsion वाला केस किस में अप्लाई होता है, किस में नहीं होता है, that we are going to learn later. But ऐसा ही मान लो एक और कंपाउंड में दिखाता हूँ. If I say I'm having another compound which is having a structure like again यही structure है and we have got another phenyl ring and we have got iodine. सर कौन से ग्रुप्स बल्कि कंसिडर होते हैं? हाँ वही मैंने बोला कि वो लिस्ट मैं पूरी दूंगा तुमको आगे जाके। तो कुछ है जिनके इम्पैक्ट पड़ते हैं, कुछ है जिनके इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं। आई गिव यू दैट लिस्ट ओवरऑल, ठीक है? बट राइट नाउ अभी देखने से ही मैं ऐसा बना ही रहा हूँ कि तुमको देख के समझ में आएगा कि किस पे अप्लाई करने का है। तो नाउ इफ आई आस्क यू इन दिस कंपाउंड, number of atoms in same plane, अभी यहाँ क्या होगा बताओ? What is going to happen here? I का रोटेशन हो जाएगा। यहाँ पे रोटेट होगा एंड ऐसा रोटेट होने से क्या होगा? These two rings will become will not be coplanar, है ना? The rings are not coplanar. Individual rings are planar. First ring is planar, second ring is planar, but they are into different plane. It is like कि just मैं दिखा देता हूँ। Okay, I'm visible ना? What I was saying that ये समझ लो ये दो रिंग है। मैंने जो दिखाया था that was planar, है ना? अभी क्या होने वाला है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो आयोडीन था, इधर जो आयोडीन था, उनकी वजह से जो रिपल्सन आया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा ना? इट विल हैपन लाइक दिस। ओके, व्हाट इज हैपनिंग? पहले मैंने इसको दोनों को ऐसा दिखाया था ना। नाउ आई एम सेइंग कि ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज कोई भी एक विल रोटेट लाइक दिस, और ऐसा होने से अगेन दे आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द आयोडीन एटम्स व्हिच वर रिपेलिंग ईच अदर, है ना? तो ऐसा करने से क्या होगा ना, दिस रिंग इज प्लेनर, दिस रिंग इज आल्सो प्लेनर, है ना? इसको मैं ऐसा दिखाऊं तो दिस इज स्टिल प्लेनर, बट दीज टू आर नॉट को-प्लेनर। इज इट ओके? क्लियर ना एवरीवन? So it's because of the repulsion that it's rotating. Because of the repulsion of the iodine atoms which are coming very close to each other because of that planar structure, है ना? So they are not becoming planar anymore because they have to minimize the repulsion, that is steric repulsion जिसको बोलते हैं। Okay? Okay, sir. Okay.
So your mic is off. Sir, you're on mute. Sir, we can't hear you. Yes, question क्या? Sir, we couldn't hear you. 1 minute. हाँ. Yeah, tell me. Sir, नहीं आप we couldn't hear what आपका you आवाज said. नहीं आ रहा था. अच्छा, I was on mute actually. Okay. So what I was saying ना, कि if you see all the green wala indicated, they are going to be in the same plane, है ना? Even if I change the plane of this ring, even then these atoms are going to be on the same line, है ना? So we can consider these atoms in the same plane. The whole ring will have a different plane, but these atoms are still in the same plane. तो green वाले देखो कितने हैं? 6 carbon plus we have got 6 plus 2 carbon इधर वाले भी, plus we have got 3 hydrogen on another side and plus 1 hydrogen on right side वाला पे, and then we have got 2 iodine, है ना? These are in the same plane, so that's why 6 2 8 3 11 3 14, है ना? 14 atoms. Is it okay? Any doubt? NO2 वाला था, उसमें आप रोटेशन के पहले जब रिपल्शन हो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या फिर से रोटेशन के कारण दिस रिंग, ये जो, हाँ जी बोलो. NO2 वाला जो एग्जांपल था, अच्छा, NO2 वाला, उसका NO2 में क्या? स्टार्टिंग, हाँ जी बोलो, NO2 में क्या? उसका स्टार्टिंग का एक्सप्लेनेशन मतलब मैंने रिपल्शन. told you ना, if you see the iodine and the group here and this iodine, they are coming very close to each other, है ना? Nitro group is coming very close to iodine and iodine, है ना? And that's why what will it do ना? Nitro group will be changing its plane. It will come in the perpendicular plane so that iodine का distance from oxygen atoms will become more, है ना? Is it okay? उसको 90 डिग्री से सोचो कि नाइट्रो ग्रुप ने रोटेट कर लिया अपने आप. Okay? ओके. So when that is happening, the distance between the iodine and oxygen is increasing, है ना? And that's why that will have now less steric repulsion. They'll have less repulsion, है ना? Because they have increased the distance. So that's why the nitro group is changing its plane, and overall the overall molecule is no more a planar molecule, है ना? Clear ना? हाँ सर. Now उसमें अगर मैंने पूछा how many atoms are coming in the same plane, तो now oxygen atoms are in the different plane now, है ना? They have come in the perpendicular plane, but nitrogen will be the part of both the planes, है ना? Nitrogen is a point that will be part of the same both the planes, क्योंकि वहीं से रोटेट हुआ है, बट वो रोटेशन वाला लाइन जो है ना, नाइट्रोजन इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ बोथ द प्लेन्स, है ना? एंड दैट्स व्हाई नाइट्रोजन को मैंने काउंट किया था यहाँ पे. इज इट ओके? यस सर. चलो, so these were the cases where we are talking about the planarity of molecules. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. Let me see.
चलो, we'll be doing some questions so that we get more confidence whatever we have learned so far. बताओ जरा इसका आंसर. A. Okay, मतलब one or more than one भी हो सकते हैं. I'm not saying more than ही होंगे, but I'm saying one or more than one. A only है ना. यहाँ देखो ना, these are sp3 है ना. यहाँ देखो ये sp3 आ गया. sp3 के अराउंड 2 एटम तो आ जाएंगे, बट नॉट मोर देन दैट, है ना. यू कांट हैव more than 2 bonds in the same plane. तो ये sp3 है, यहाँ sp3 है, so this will not be there, है ना. And then if you see this one again, these are sp3 only. ये सब sp3 है. Okay, so that's why A only. Tell me the answer of this one. C. Okay, you are saying C. Anyone else having any other answer or same answer? See, na, in all these cases, these are sp2 only, है ना. सबके सब sp2 आ रहे हैं, and with sp2 they are not having any exceptional वाला केस. अभी तक जो देखा है, those are not the cases, है ना. सब sp2 वाले हैं. So, उधर 2 ऑक्सीजन का ये नहीं होगा, But they रिपल्शन are नहीं at होगा. 120 वाला, they are not at just इतना क्लोज नहीं आ रहा है. They are single atoms. तो एक तो हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया कि आगे जाके पढ़ेंगे, तो कोई मोनो एटॉमिक पार्ट है ना, तो दैट इज नॉट गोइंग टू फील एनी रिपल्सन, है ना. वो रोटेट करके भी क्या करेगा, इट विल रिमेन इन द सेम प्लेन, है ना. ऑक्सीजन अगर रोटेट भी करवाते तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना. एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी स्टेरिक रिपल्सन, है ना. मतलब स्टेरिक रिपल्सन कैन बी देयर, बट दैट इज नॉट कॉजिंग द लॉस इन प्लेनरिटी. दे आर इन द सेम प्लेन. ओके, यहाँ देखो ये वाला बीच वाला पार्ट इज sp2 only, तो इट इज स्टिल मेंटेनिंग. यहाँ देखो दिस वन इज sp3, है ना. तो अगर इन दोनों को, रिंग को मैंने एक प्लेन में लिया ना, तो 2 हाइड्रोजन जो बचेंगे ना, दे विल बी कमिंग अबव एंड बिलो द प्लेन, है ना. दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर. यहाँ पे एवरीथिंग इज sp2, है ना. ऑल द एटम्स आर sp2, all sp2, है ना. And that's why C will be the answer. Now next one is So could you explain again that oxygen part, like if you rotate it? A option. Yes, A option. एक पेन ले लो और उसको रोटेट करते रहो. Is it changing the relative position or the distance? स्पिन करो पेन को. It is just no. one atom ना. मैंने Yes. यहाँ पर मान लो एक ऑक्सीजन रख दिया, तुम रोटेट करो ना. Is it changing its distance from anyone? Oh, no, sir. नहीं ना, तो that's why it will not have any effect, है ना. Okay, sir. Now next question. We are having 3 questions actually. 6. Satyam, sure, one answer is wrong, one is right.
First one. Answer. Mayuresh, your one answer is wrong, one is right. Pratyush, your one answer is right till now. Okay, so I'm getting mostly first के लिए जो answers आ रहे हैं, that is coming 7, 8 and 6. These are the answers. मतलब 6, 7, 8. These are the answers we are getting. Now you see that ना hybridization देखो अपने आप समझ में आएगा. This first carbon is sp2 hybridized, तो इसके around planarity will be maintained है ना. Then second carbon is also sp2 hybridized, so planarity will still be maintained. But the third carbon is sp3, तो sp3 के around we can bring two bonds in the same plane. तो मान लो इन दोनों के ले आया. अभी now third and fourth will be coming above and below the plane ना. They all cannot be in the same plane because it is sp3 है ना. This is sp3. Now count the atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 only है ना. ओके जिन लोगों ने 8 बोला है शायद उन्होंने 2 हाइड्रोजन को ले लिया था, बट ऑलरेडी इसका 1 बॉन्ड इज देयर विद कार्बन है ना, तो 1 मोर बॉन्ड कैन बी ब्रॉट इन द सेम प्लेन. दैट्स व्हाई विल से इसका आंसर विल बी 7. ओके सेकंड वन, इट इज B2H6. आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो B2H6 का दो बनाना बॉन्ड बनते है ना. हाँ banana bond. तो ये दोनों एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में, ये प्लेन में, और जो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक नीचे आता था ना, सो दैट्स व्हाई बनाना बॉन्ड के कारण वी कैन ब्रिंग 6 एटम्स इन द सेम प्लेन है ना. Now next one is benzoic acid. Benzoic acid is like this. और कहीं एक जगह COOH लगा. Now if you see carbon, this carbon is also sp2 only. This is sp3, but इसके पास दो ही बॉन्ड दिख रहे हैं, तो both of the bonds can be brought in the same plane ना. Remaining two are lone pairs है ना. So this is sp3, but it is having only two bonds. So all these atoms can come in the same plane, and that's why whatever are the number of atoms now, this is actually C6H5COOH. And now, as discussed, all the atoms can be brought in the same plane. So you have to just count all the atoms, है ना. So we'll say 6, 5, 11, 12, 3, 15. So 15 will be the answer. Is it okay? तो ये ऑक्सीजन वाला रिपीट कर सकते Oxygen is sp3 है ना, दो lone pair, दो sigma bond है ना. But with sp3 we have learned that two bonds can be brought in the same plane है ना, and that oxygen is having only two bonds, so they can be brought in the same plane. So everything is becoming in one plane only. Is it okay? अच्छा यस सर. है ना. That's why 15 will be the answer. सर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन भी सेम प्लेन में है. डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन यहाँ पे ये तो sp, ये तो टर्मिनल ही हो गया ना, कार्बन के अराउंड ये सेम प्लेन में ही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, लोन पेयर्स है ना. ओके सर. दैट इज sp2, बट उसमें लोन पेयर तो मैटर नहीं करता ना प्लेनेरिटी के लिए. लोन पेयर इज देयर, तो उसको हम लोग शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में लेते नहीं है ना. So can you tell the first one again? फर्स्ट वन, दिस वन, Yeah. this is sp2 है ना. So whatever I have formed, that will be the actual arrangement of atoms around carbon है ना. 120 जैसा एंगल होता है, डबल बॉन्ड का थोड़ा सा ज्यादा एंगल मेंटेन करेगा, बट इट इज स्टिल प्लेनर. The second atom is also sp2, so planarity will still be maintained around it. Third atom, which is sp3, can have only two bonds in the same plane. So one bond is this, I can take one more bond in the same plane, the remaining two will be coming above and below the plane है ना. So So why? whatever we have formed, जितने मैंने red से दिखाया, they are becoming the part of the same plane है ना. So why only two? हाँ जी. So why only two? So you can't have more. sp3 का structure is like that only ना. Tetrahedral arrangement is there, then you can bring two in the same plane, then third and fourth will be coming above and below the plane है ना. Yeah. That is the tetrahedral arrangement है ना. So Yes. sp3 hybridization means tetrahedral arrangement of all the electron pairs around it. So two bonds can be brought in the same plane, they can be brought in the same plane, and the third and fourth will be coming above and below the plane. Yes. Okay. So next one. Any other doubt? चलो इसको बताओ.
Okay. I'm getting different answers again. मेरे उस क्वेश्चन पढ़ो जरा. Okay. अभी तक मुझे C, D, A तीनों आ चुके हैं. I told you ना, अभी जस्ट ये एलिन वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था. All the atoms will be in the same plane, but the terminal two hydrogen atoms will be above and below the plane. Above the plane को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, below the plane को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना. So this is not a planar structure. If I am keeping everything else in the same plane, then the remaining two hydrogen atoms will be, one will be above the plane, another will be below the plane, and that's why C will be the right representation. ना. A का मतलब everything is in the same plane, है ना. That is not true. Okay. डी क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा, इसको ऐसा रखा भी ना, तो अगर मैंने इन सबको ऐसा रखा और इसको भी ऐसा रखा तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम प्लेन में है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा था दे कैन नॉट बी इन द सेम प्लेन, है ना. दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टिंग दिस ऑप्शन डी. इज इट ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. Okay, now you are clear. This is completely planar molecule, है ना. So everything will be in the same plane, so we can show it like this, है ना. A will be the answer, है ना. इसमें तो सबने A ही बोला है. हाँ. Okay, next one. This one. वन और मोर देन वन हो सकता है. ये जार भी लिख दिया मैंने. Okay. Now I have started getting right answers. Okay. Okay. Yash and Sarang, your answers are not right. बाकी लोगों का अभी तक तो राइट आ रहा है. Udayan, your answer is not right. So A is planar, there is no question about that, है ना. Now if you see the second structure, this is very important. So JEE का favorite है ये molecule. This is called tropylium cation. This is cation, है ना. So it is having just one hydrogen and another is vacant orbital. So this is also sp2. And up to 7 membered there was no problem of that. हम लोग जो बात कर रहे थे, that's why this will also be planar. This is called, इसका नाम है, J का फेवरेट है ये. नॉर्मली मॉलिक्यूल्स को बहुत कम रिपीट करता है J. दिस इज वन मॉलिक्यूल जिसको कई बार रिपीट कर चुका है. ट्रोपीलियम केटायन बोलते हैं. बाद में जाकर देखेंगे दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड. A and B both are aromatic compound. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, but this is very important. Okay. Third will not be there because I already talked about angle strain के कारण ये structure रहता नहीं है. It will be having a non-planar structure. D वाला भी same point था. In the given structure, it was having angle strain. अगर मैंने 120 maintain किया तो hydrogen atoms were coming in the proximity, and that's why that was losing polarity again. है ना? So that's why C and D will not be right, but A and B are right. Okay. Sir, B क्यों planar होगा? क्या क्या फिर से? Why would B be planar? B में देखो ना सारे atoms sp2 ही है ना. Sir, Why but that atom circle जो किया वो क्यों sp2 है? Because it is having plus charge. Plus charge का मतलब there is a vacant orbital है ना. So there are 3 bonds only. So that atom is also sp2 hybridized, है ना. sir, but Everything angle will. 120 से ज्यादा हो गया. हाँ जी. In हाँ, the मैंने क्या बताया कि एंगल स्ट्रेन मैटर कहाँ करने लगता है, तो वो 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड होता है ना, 7 के बाद, नॉट 7. ओके. अच्छा. Up to 7 it is okay. Angle strain is not that high
that it will lose the polarity, and it is having some incentive because of it. It will try to gain that. It will try to get that polarity. इसकी बात हम लोग आगे करेंगे. There is something called aromaticity. This is becoming aromatic if it remains planar, है ना? तो हम लोग aromaticity के कारण stability आती है, and that stability is overcoming the impact of instability by the angle strain, है ना? तो up to 7-membered ring there is no problem of that part, है ना? तो instability जो आने वाली थी angle strain के कारण, that is being overcome by something called aromaticity. इसकी बात आगे हम लोग करेंगे, बट मैंने ऑलरेडी जनरल रिजल्ट बता दिया था. अप टू 7-membered ring it is okay. 8 onward दिक्कत है ना? Okay, next one. This one. ये तो ऑलरेडी करवाया हुआ है, बट यू कैन सी इट. Okay, Mark has given me the answer. Neil has given the answer. Then has got the answer. Already discuss किया था ना ये चीज तो. Already we are knowing that ये nitro group जो है that is having steric repulsion with these iodine, and that's why it will lose the polarity, है ना? Nitro group is not coplanar with the phenyl. Individually nitro group is planar part, ring is planar, but they are not in the same plane. It will try to get the perpendicular plane, ना? So that's why C बट will be. नाइट्रोजन प्लेनर होगा ना बस सिंगल, हाँ, सिर्फ नाइट्रोजन प्लेन में होगा ना? nitrogen will be the part of the both the planes, है ना? Nitrogen atom will be the part of both the planes, है ना? नाइट्रोजन पे तो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इट्स लाइक कि नाइट्रोजन के ऊपर ये परपेंडिकुलर प्लेन में जाके दोनों ऑक्सीजन विल बी कमिंग इन द परपेंडिकुलर प्लेन. नाइट्रोजन विल बी द पार्ट ऑफ बोथ द प्लेन्स. इट इज अ पॉइंट, है ना? अ पॉइंट कैन बी द पार्ट ऑफ बोथ द प्लेन्स, है ना? यस. Okay, so nitrogen will still be there, but it will also be the part of the perpendicular plane also. But दोनों ऑक्सीजन definitely will leave this plane. चलो अभी there are some other concepts also involved. इतना काफी कर लिया हम लोगों ने. एक concept, basic concept कर लिया. There are other factors like bond angle, bond length, dipole moment, other concepts. उसमें से mostly I'll tell you to revise everything from chemical bonding वाला notes. But कुछ चीजें मैं यहाँ discuss कर देता हूँ, जैसे few questions will be discussing. So if I ask you decreasing order of bond angle. In fact, I can add some more questions. Okay, चलो इतना ही करो, बाकी तो केमिकल बॉन्डिंग से यू हैव टू रिवाइज इट. ऑलरेडी किया हुआ है सब. ये सब देखो, सब में सबसे पहले क्या कहते हैं, वी चेक द हाइब्रिडाइजेशन. ऑल ऑफ दीस आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना? एंड विद डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर्स. तो जितना ज्यादा लोन पेयर उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाता है ना, बिकॉज लोन पेयर से डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन करना चाहता है बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी हैविंग लेसर बॉन्ड एंगल, एंड दैट्स व्हाई द वन व्हिच इज हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ lone pairs on the central atom will have the highest bond angle. और उसके बाद फिर NH3 आएगा, and then we'll get H2, है ना? It is having sp3 with 0 lone pair. This is sp3 with 1 lone pair. This is sp3 with 2 lone pair, है ना? And that's why bond angle will be having this one. Again यहाँ भी वही कहानी आ रही है. NH4 में this is sp3 with 0 lone pair. H3O plus is sp3 with 1 lone pair. And this is sp3 with 2 lone pair. Already देखा हुआ है. तो NH4 plus में तो ideal bond angle आ जाएगा, that is 109 degree 28 minute. H3O plus will have less bond angle because of 1 lone pair present on the oxygen, and then H2O के पास तो 2 lone pair है, it will have more repulsion. That's why that will be the angle. Third का बताओ.
It is about the hybridization. Benzene में देखो everything is sp2 hybridized every carbon, so bond angle is 120 डिग्री है ना, तो बेंजीन में 120 डिग्री एंगल आता है. दूसरा वाला साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन इज लाइक दिस, इसमें एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट. ये बाद में स्ट्रक्चर देखेंगे इसका डिटेल में, बट एवरीथिंग इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट. एसिटिलीन इज लाइक दिस, it is sp hybridized, so bond angle is 180 degree. That's why we'll say, if they're asking you decreasing order, we'll write acetylene, जिसमें 180 डिग्री है, then benzene, and then we'll have cyclohexane, because the hybridization itself is changing. Any doubt? Anyone for the fourth question? Who can answer the fourth question? Just a second. फोर्थ वाला देख के बताओ. No, Sharang, answer is not right. Neil, not the right answer. Decreasing order पूछा है. Sharang still not right. I think Mayuresh has got the right answer. Mayuresh, tell me the reason. You are saying NCl3 greater than NS3 greater than NF3. What's the reason? So NCl3 is greatest because Cl का साइज बहुत ज्यादा है, so रिपल्शन हो जाएगा. तो वैसे तो H के सामने F का साइज भी ज्यादा है. नहीं, मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल आएगा सर. हाँ, वो तो समझा. इसमें हम लोग वी कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स ओके. बट यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं? यू आर सेइंग साइज. ऐसा हो गया कि लकली इट इज गिविंग यू द सेम आंसर, बट इट विल नॉट बी ऑलवेज बी वैलिड. यहाँ पे हम लोग बैक बॉन्डिंग का रीजन देते हैं. What is happening here na? Nitrogen is having a lone pair and the Cl atoms are having vacant d orbital है ना. They can have back bonding and back bonding के through lone pair is getting delocalized. तो lone pair के कारण जो repulsion आ रहा था वो कम हो रहा है ना, because of back bonding. back bonding होने से क्या होगा, इसमें pi character आएगा, lone pair will be delocalized, and that's why यहाँ पर क्या हो रहा है, it is going from sp3 towards sp2 hybridization है ना, तो bond angle will definitely be increasing, and that's why we are saying कि NCl3 का NH3 से ज्यादा होगा. When we compare NH versus H versus F, we take the help of electronegativity always. तो central atom पे if I am having at least one lone pair, then when you increase the electronegativity, bond angle will decrease, है ना. उसका लॉजिक पता है सबको? Why I am saying NF3 will have less bond angle? The shared electron in case of more electronegative atom will be more closer to the electronegative atom है ना. तो देखो ना, सेम एंगल मेंटेन करते हुए अगर मैंने सेम एंगल मेंटेन किया, यहाँ H रखा और H रखा, एंड दूसरे केस में यहाँ F और F रखा, H और H के केस में the electron pairs will be coming somewhere here, तो फिर यहाँ पे it will be coming somewhere here. Now they are having greater distance, this is having less distance ना. So obviously in order to decrease the bond pair repulsion, it will increase the angle है ना. And that's why we are saying कि NH3 will have greater bond angle than NF3. ये सब chemical bonding का discuss किया हुआ है. Fifth question का answer. So can you tell NCl3 again? NCl3 में there is a something called back bonding. Do you know that? Back bonding? Okay, सर मैं भूल गया सर. Okay, basic point बताता हूँ. If I am having A bonded with B ना, and if A is having lone pair, another B is having vacant orbital,
then this is also a resonance only. Then they can have back bonding. That means they can form a coordinate bond. So ultimately, this will be having a double bond. It is like this. Okay. So this is called back bonding if both the atoms are from second period or at least one is from second and another is from third, then it is considered to be effective. Okay. तो अभी देखो ना यहाँ सिस्टम जो आया है अपने पास नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर एंड Cl which is from third period is having vacant d orbital है ना. Yeah. Due to vacant d orbital ना what will happen, यहाँ देखो लोन पेयर है यहाँ vacant d orbital, they can have back bonding ना. एंड बैक Yes. बॉन्डिंग के बाद जब मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा तो ये कैसा पेयर होगा, दिस विल बी लाइक दिस वन है ना, एंड देयर इज नो लोन पेयर नाउ एनी मोर है ना. हाँ. अभी इसका हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड ओनली, तो दिस इज बिकमिंग sp2 है ना. sp2 का एंगल कितना हो जाता है 120 है ना. Yes. So we are not saying that कि ये 120 हो जाएगा, but we are moving from sp3 towards sp2, so that is causing increase in bond angle है ना. हाँ. Okay, sp3 का आइडियल बॉन्ड एंगल वाज 109 डिग्री, 109. sp2 का 120, तो it is moving from sp3 towards sp2 because of back bonding, and that's why bond angle will be increasing. And Okay. size is additional factor. Cl का size भी ज्यादा हो जाता है, वो that is additional factor, but that is not the main factor because somewhere it will be giving you उल्टा result दे देगा कब. Okay. चलो fifth question anyone. Fifth question, bf3 bcl3 bbr3 bi3 भी लिख देता हूँ. Tell me the order of bond angle. Okay, Udian has given me some answer which is wrong. Anyone else having any answer? Rishit has given me answer which is wrong. Neil has given me answer which is wrong. Udian, your answer is still wrong. अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया तो फिर सबके रॉन्ग आने. किसी ने 1 2 3 4 बोला, किसी ने 4 3 2 1 बोला. These are किसी एक ने 3 4 2 1 बोला है. These are the given answers जो अभी तक आए हैं. My answer is तो पहले understand वाले this में point. ड्रैगोज रूल रखता है. इसी में ड्रैगोज रूल नहीं लग रहा है. ड्रैगोज रूल लगता था when central atom is from third or onward period with at least one lone pair and surrounding atoms are hydrogen or practically hydrogen, but otherwise electronegativity less than 2.5 है ना. practically it is hydrogen. तो H2S में लगता है वो, PH3 में लगता है वो, not BF3 BCl3 BBr3 BF. All these atoms, all these compounds are having central atom with sp2 hybridization and zero lone pair. ये सारा डेविएशन तब आता है ना जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होता है ना, तब बात होती है लोन पेयर से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेगा, लेस डिस्टेंस मेंटेन करेगा. इफ देयर इज नो लोन पेयर इट इज गोइंग टू हैव आइडियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है ना. हाउ मच एंगल विल बी देयर, sp2 जीरो लोन पेयर, कोई डेविएशन ही नहीं है, 120 डिग्री. तो अगर सबके सब 120 पे हैं तो दे आर ऑल इक्वल ना. इज इट ओके? Similarly, if I give you another example, ये सब tricky question कुछ बनते हैं. If I give you another example, if I give you like मान लो BH4 minus CH4 NH4 plus, ये सब बराबर है, सबके 109 डिग्री 28 मिनट. Why? Because they are all having ideal bond angle as per the hybridization sp3. There is no lone pair on the central atom है ना. All the surrounding atoms are identical, so definitely they'll have ideal bond angle which is 109 degree 28 minute. Okay.
So deviation तब आता है if central atom is having at least one lone pair and then we talk about कि central atom change हो रहा है हर केस में या फिर surrounding atom change हो रहा है या फिर number of lone pairs change हो रहा है. But there should be at least one lone pair on the central atom. Then only we can have other factors acting. If there is no lone pair on the central atom and all the surrounding atoms are identical, then there is no change in the ideal bond angle, है ना. किसी ने पूछा BCl3 का एंगल कितना है, you'll say 120. BF3 का कोई पूछेगा, I'll say 120. तो they are same ना. Okay. Any doubt? Next question. No, Sarang. Not equal. Okay, Neil, your answer is not right. Udayan, your answer is right. Logic तैयार रखना. Organic may always look for the point of difference, and that will give you some answer. Mayurich, your answer is not right. इसके पहले I think Neil का आंसर राइट नहीं है. Udayan has got the right answer. Mayurich's answer is not right. Rishit, your answer is not right. Mark has got the right answer. Niranjan has got the right answer. Okay, let's see. We are talking about this bond, and this bond. Sarang's point of view is every time we are getting C single bond C, है ना? There's nothing else. So that's from that point of view, they should be equal, but there is some point of difference. And the point of difference is this is sp hybridized, this is sp2 hybridized, and this is sp3 hybridized, है ना? And size of sp3 is greater than that of sp2, then greater of sp, है ना? So if I'm talking about size of orbital, we are saying that sp3 greater than sp2 greater than sp, because p character बढ़ने से size of the orbital is increasing, and that's why bigger orbital will form longer bond, है ना? So we are saying bigger orbital forms longer bond. Okay, and that's why we are saying answer will be 3 2 then 1. So the answer will be 3 2 then 1. Is it okay? Clear now? There are two questions. अभी तो you should give the answer. फर्स्ट का आंसर बताओ. Okay, Sarang has got the right answer this time. Mark has got the right answer. Very good. Rishit has also got the right answer. Udayan has got the right answer. Now you are getting the concept. ये sp3 है. In this cases ना यहाँ ये सब जगह sp3 ही था. This was sp3 only in all these cases, है ना? But the another part was changing. यहाँ पे ये sp3 है, ये भी sp3 है.
ये देखो sp2 है, ये भी sp2 है, तो दोनों ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेटिंग है ना इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, दे आर getting shorter in case of this is sp only, not sp2. This is sp and sp, है ना? That's why shorter orbital will form shorter bond also, and that's why it will be A, then B, then C. What about the second question? Second question. Rishdi, your answer is not right. Mark, your answer is not right. It is always CH bond, but again we have to see ये carbon देखो क्या है, hydrogen तो every time is utilizing its 1s orbital, है ना? इसके लिए तो 1s ही use हो रहा है, but this time it is sp3. In this case it is sp2, and in this case it is sp again. This is utilizing every time 1s only, but the another part is utilizing a bigger orbital in case of A, and that's why it will be forming a longer bond, है ना? Is it okay? बहुत ज़्यादा difference नहीं रहेगा, but if they are asking, you have to give some answer, है ना? Yes, why CBA? क्या कर पड़ेगा? सर मैंने इंक्रीजिंग में डाल दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, तो वो गड़बड़ है, समझो ना, है ना? हाँ। तो we need to take care of that. मतलब you are knowing the thing, but you are reporting the wrong answer. मतलब you deserved Yes, yes. +4, but you are getting -1, है ना? Yes, sir. That we don't have to do. Yes, sir. Okay. एक और क्वेश्चन देखता हूँ, थोड़ा सा डायपोल मोमेंट का डिस्कशन करना रह गया, वो नेक्स्ट डे कर लेंगे, एंड देन वी विल एंटर इनटू द न्यू कांसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड रेजोनेंस। जरा सा जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था रेजोनेंस, उसको रिवाइज करके आओगे, यहाँ पर तो बहुत डिटेल में जाने वाला। C2C3 बॉन्ड लेंथ मतलब सेकंड एंड थर्ड कार्बन का, लाइक ये कार्बन एंड ये so कार्बन के बीच का बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस। Okay, Mahak and Udayan have got the right answers. Mahresh has got the right answer. Again, check the hybridization of this atom, sp2. This is also sp2. This is sp3. This is sp3. This is sp2 and sp3, and this is sp2 and sp, है ना? And that's why if I have to write the decreasing order, so we will say highest will be B वाला होगा, है ना? sp3 दोनों है. C वाले में we have got one sp3 and one sp2. A वाले में we have got sp2 and sp2, and D वाले में we have got sp2 and sp. Sp is the shortest one. BCAD will be the answer. ओके ठीक है, आज यहीं पे क्लोज करते हैं। किसी का डाउट रहेगा तो रुक जाओगे, नेक्स्ट डे आई विल बी गिविंग यू एक मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है? तो यू जस्ट ट्राई टू हैव दैट प्रैक्टिस ऑफ दोज क्वेश्चंस, एक बार वो करके आओगे, एंड देन उसी में मैं डायपोल मोमेंट वगैरह के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा। जिन लोगों ने पहले से केमिकल बॉन्डिंग मेरा किया हुआ है उनको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, डायपोल मोमेंट वगैरह अच्छे से डिस्कस किया था, सो मैंने एग्जांपल्स वी हैड डिस्कस, तो उसको एक बार रिवाइज भी कर लोगे। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए भी नोट्स मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है ना? केमिकल बॉन्डिंग आई हैव शेयर्ड ना? If I'm not shared, तो ask me, है ना? I'll give you the notes, ठीक है? तो वो चीज एक बार देख लोगे, and then we'll enter into the new concept which is called resonance. हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में उसको भी देखा था, शॉर्ट में देखा था, बहुत लिमिटेड वे में वहां देखते हैं। यहाँ बहुत डिटेल में देखना है, क्योंकि रेजोनेंस के बिना ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, सिंपल एक लाइन में। इफ यू डोंट नो रेजोनेंस, यू कांट क्लियर द क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सीधी सी बात है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, बहुत अच्छे से समझेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो आई विल बी सेंडिंग यू सम क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, उसको ट्राई कर लोगे, सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंस व्हाटएवर वी हैव लर्नड सो फार, एंड थोड़ा सा वही जो मैंने बोला रेजोनेंस देख के आओगे, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन। Bye.